Hello children, I hope you all doing good. Let's start today's chapter, Plants Around Us. Learning objectives, parts of a plant, types of plants. There are many types of plants around us. Look at the pictures given below. Write in the spaces provided whether the plant is a big plant, a small plant, a climber or a creeper. देखिए हमारे आसपास बहुत सारे plants हम देखते हैं. रोज़ाना कोई ना कोई plants देखते हैं, right? आपको एक picture दी गई है and then आपको space given है. तो आपको ये बताना है कि whether this plant is a big plant or a small plant, climber or a creeper. Our world is made beautiful by plants. We see plants everywhere. They grow on land and in water. They grow in cold places as well as in hot places. They can be small or big and short or tall. They keep our surroundings clean and fresh. देखिए आपको पता है कि प्लांट्स हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं. प्लांट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. अब वो टॉल भी होते हैं, बिग भी होते हैं, स्मॉल होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं और ये हमारे सराउंडिंग को क्लीन और फ्रेश रखते हैं. पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. Look at this mango tree. It has got many parts. Leaf. This is the kitchen of a plant. Here, food is made for the plant in the presence of sunlight, air and water. So you can see this is mango tree and the first part is leaf. Leaf को कहा जाता है kitchen of a plant. That means kitchen में क्या होता है? खाना बनता है obviously. So इसका मतलब जो leaf है वो भी क्या करती है? Plant के लिए खाना बनाती है. Next is branch. Branch grows from the stem. It bears leaves, flowers and fruits. Stem. Stem grows above the ground. Sorry. Stem. branch से फिर बोलते हैं. Branch. Branch grows from the stem. It bears leaves, flowers and fruits. Stem. Stem grows above the ground. It is brown or green in color. It carries water and food to all other parts of the plant. So what is the function of branch? आपकी एक्चुअली जो ब्रांच है वो स्टेम से ग्रो करती है एंड स्टेम का काम क्या होता है? ये आपका कैरी करती है वाटर एंड फूड प्लांट के सारे पार्ट तक. रूट. It is the underground part of a tree. It gives support to the plant. It takes in water and minerals from the soil. So, what is the function of root? Main function is it gives support to the plant. Fruit. Flowers grow into fruit. Fruits are eaten by men and other animals. Fruits have seeds inside them. Flowers जो है आपके fruits में grow करते हैं and fruits को consume कौन करते हैं? Obviously, human beings and animals. Seed. Baby plant grows from a seed. Seed is protected by soft pulp of the fruit. Baby plant जो है आपके seed से grow करता है and seed को protect करता है आपका soft pulp जो fruit का होता है. Okay, so here is a plant given and you have to name its different parts. तो इसे आप खुद से करेंगे. Types of plants. Plants are of different types, shapes and sizes. There are big plants and small plants. Plants. So plants are of two types, big plants and small plants. Further इनको categorize किया गया है. आपके big plants में आते हैं trees and आपके small plants में आते हैं climbers, creepers, herbs and shrubs. Trees. The big, tall and strong plants are called trees. They have hard, brown and woody stem called trunk. The trunk divides into many branches, forming a huge crown of leaves on the upper side of the tree. The branches bear many leaves, flowers and fruits. Trees live for many years. अब आपके जो big, tall और strong plants होते हैं उन्हें हम कहते हैं trees. इनके stem जो होती है काफ़ी strong होती है and hard and brown color की होती है. Branches से आपके बहुत सारे उसमें से leaves, flowers and fruits निकलते हैं. आपको पता है कि trees का जो लाइफ स्पैन होता है काफ़ी सालों तक का होता है. Fact file. The smallest plant, duckweed, is so small that you can put a dozen of them on your nails. On the other hand, the redwood trees are as tall as a 30-story building. आपका सबसे छोटा जो प्लांट है that is duckweed and ये इतना छोटा है कि that आप सिर्फ एक नेल पे डजन रख सकते हैं, यानी डजन तक यानी कि 12 नंबर्स तक आप रख सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री आपका कितना बड़ा है दैट जितना आपका 30 स्टोरेड बिल्डिंग होता है. ट्रीज हैव डिफरेंट शेप्स सच एज ओके ट्रीज. देखिए ये ट्रीज इनके डिफरेंट शेप्स है, कोई भी सिमिलर नहीं है. श्रब्स. द स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. दे हैव thin brown or green colored woody stem. They have many branches. Shrubs generally live only for few years. Some examples of shrubs are okay. अब आपके जो shrubs होते हैं वो छोटे तो प्लांट होते हैं बट ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड shrubs का जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ सालों तक का होता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं shrubs के.
So here are the examples of shrubs. Herbs. The small but weak plants are called herbs. Their stems and branches are green and soft. Herbs have their own smell. Many vegetables and spices are herbs. Herbs live only for 3 to 4 months. Some examples of herbs are herbs आपके weak and small plants होते हैं. And herbs की खासियत क्या होती है, स्पेशलिटी होती है that they have their own smell. आपके बहुत सारे वेजिटेबल या स्पाइसेस के हर्ब्स में आते हैं एंड इनका लाइफ स्पेन होता है 3 to 4 months. सो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ सम हर्ब्स. Climbers. The plants which need support to grow are called climbers. They have weak stems. They need support of a stick or a wall to grow along with. Some examples of climbers are climbers आपके वो plants होते हैं जो कि weak होते हैं और एक support की ज़रूरत होती है. So ये आपके examples हैं सारे climbers के. Next, creepers. The plants which grow along the ground are called creepers. They have weak green stems with thin branches. They rest on the ground. They generally bear big heavy fruits. Some examples of creepers are आपके जो creepers होते हैं आपके ground में grow करते हैं और generally इनके जो fruits होते हैं काफ़ी big होते हैं. So here are the examples of creepers. Thorny plants. Plants that have sharp outgrowths to discourage plant-eating animals from eating them are called thorny plants. They may have spines, thorns, or prickles. In desert areas, plants have spines which are actually leaves of the plants. Spines help to reduce water loss from the plants. Stem of many plants have sharp outgrowth called thorns. Some plants like the rose have prickles. Some examples of thorny plants are थॉर्नी प्लांट्स. थॉर्न यानी आपके होते हैं कांटे. तो ये जनरली आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं. एक्चुअल में लीव्स ही होते हैं बट ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन में ताकि वाटर लॉस बच सके. और इसके अलावा आपके जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें थॉर्न्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं, राइट. जैसे आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं इनमें अगर आप नोटिस करेंगे तो दे हैव ऑल दीज हैव सम काइंड ऑफ स्पाइंस और थॉर्न्स. Water plants. Plants that grow in water bodies such as ponds, lakes, rivers, etc. are known as water plants. Some of these plants float. They are known as floating plants, for example, lotus and duckweed. Many of these plants grow inside water. They are known as submerged plants, for example, seaweed, hydrola, etc. Plants जो आपके पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम aquatic plants कहते हैं. तो कुछ plants आपके float करते हैं, for example, lotus and duckweed, and कुछ ऐसे plants होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, for example, seaweed and hydrola, and they are known as submerged plants. Fact file. Spices have been important to mankind since the beginning of history. Pepper and cinnamon were in great demand then. Over the ages, herbs have been used for medicinal purpose and to flavor food items. Spices यानी कि मसाले काफ़ी important होते हैं कि हमारे खाने में flavor add करते हैं. तो ये काफ़ी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, हमें use करते आ रहे हैं. Summary. Plants have different parts which help in different ways. There are different types of plants. The big, tall and strong plants are called trees. The small but strong plants are called shrubs. The small but weak plants are called herbs. The plants which need support to grow are called climbers. The plants that grow along the ground are called creepers. So plants को आपको differentiate किया गया है अलग अलग categories में. For example, big, tall, strong plants को कहा जाता है trees, and small but strong plants are shrubs, and small but weak plants are called herbs, and climbers and creepers. चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.